मोक्षमार्गस्य नितारं नितारं कर्मनिरतं ज्ञातारं ईश तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वान सूत्र में हमारी चर्चा अनर्थ दंड के अलग अलग प्रकार के भेदों पर चल रही है और उसमें कल दुश्रुति नाम का जो अनर्थ दंड है उस पर हमने विचार किया था। ये एक गजब बात है जो जैन धर्म में अपन ने देखी कि बुरा मत कहो। ये जो गांधी जी ने कहा बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, ये इसका मूल अगर देखा जाए तो जैन धर्मों से मिलता है। बुरा मत सुनो दुश्रुति में आ गया, बुरा मत कहो ये आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति में आ गया, बुरा मत करो ये काय की प्रवृत्ति में आ गया। यानी जो गांधी जी ने 3 बंदर कहे, वो 3 बंदर एक्चुअल में गांधी जी ने जैन दर्शन से अडॉप्ट किए। अब वो गांधी जी के पेटेंट हो गए, जबकि जैन दर्शन ने तो बुरा मत सोचो मतलब चौथा बंदर भी बना, लेकिन गांधी जी को लगा इसको पालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। गांधी जी ने 3 ही बंदर पकड़े। लेकिन जैन धर्म कहता है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो, बुरा मत दो। ऐसे जैन दर्शन में विविध प्रकार से इन चीजों को समझाया गया है। लेकिन गांधी जी को लगा कि ये सब तो बड़ा बुरा मत सोचो तक करना तो बहुत कठिन पड़ जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा मतलब ये बात कह दी कि चल भाई यहाँ तक रखो, बात ठीक है, बाकी सब अपनी जगह सेट कर लो। बराबर। तो कहने का तात्पर्य है इतना मनोवैज्ञानिक धर्म जैन धर्म कि जहां पर एक एक चीज पर विचार गहराई से किया जाता है, एक एक चीज पर ये बताया जाता है, विचारा जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, किसको कहना चाहिए, क्या देना, मतलब एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग। जैन धर्म एक कोई किताब नहीं है, कंप्लीट लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान है पूरा का पूरा जैन धर्म। कोई भी चीज जैन धर्म में देखोगे तो वो एक पूरा जीवन विज्ञान है, जिसकी तुलना अन्यत्र कहीं पे भी होना मुश्किल है। इतनी गहराई से बारीकी से सब चीजों पर विचार किए हैं, बारीकी से सब काम हमारे यहाँ पे सिखाया बताया जाता है, जो लगभग लगभग अन्यत्र मिलना इम्पॉसिबल जैसा है। ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है। दुर्भाग्य उनका है कि जो जैन होने पर भी जैन धर्म की जीवन शैली को मात्र कहते हैं कि ये बांधने वाली जीवन शैली है, मतलब भोगों में बंधना वो उनको तकलीफ वाला नहीं लगता है। लेकिन धर्म में अगर आपके हित के लिए करना हो तो उन्हें तकलीफदायक लगता है। ये चीज नहीं समझ में आती। बंधन तो सब जगह है ना भैया। आज भी अगर आप रोड पर निकलो तो सीट बेल्ट नहीं बांधोगे तो गवर्नमेंट फाइन लगा देगी। आपको ना ना ये तो बांध देती है मुझे सीट बेल्ट, मैं क्यों बांधू। 2 व्हीलर पर निकलो, हेलमेट नहीं लगाओ, हेलमेट नहीं बांधो तो गवर्नमेंट फाइन लगा देती है। तो आप मोर्चा खोलते हो गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई શું તમે આ બધું ફાઇન ले करो છો। અમે स्वतंत्रता प्रिय माणस છીએ, ભારત આઝાદ થઈ ચુક્યો છે, હવે કોઈ અમને બાંધી શકતો નથી, પછી તમે સીટ બેલ્ટ થી કેમ બાંધો છો। તો પોલીસ વાળા શું કહેશે કે ભાઈ તું તો જશે, ખબર નહીં કેટલાને લઈને જશે। એટલા માટે સીટ બેલ્ટ બાંધવું ફરજિયાત છે। તો જેમ સીટ બેલ્ટ બાંધવું ફરજિયાત છે એવી જ રીતે જીવનમાં અમુક નિયમો ફરજિયાત છે જે તમને બાંધતા નથી, અપિતુ ઈચ્છાના બંધન અને પ્રમાદના બંધનથી મુક્ત કરે છે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આ વસ્તુ સમજવાની છે। એટલા માટે શું કહેવું છે એમાં પણ વિચાર કરવામાં આવે અને શું બોલવું છે એનો પણ વિચાર કરવામાં આવે છે। દેખો હવે કાલે વાત આવી હતી ને મોટા ભાગે આપણી એ જ વસ્તુમાં ચર્ચા ચાલે છે, એ પણ આપણે નક્કી કર્યું હતું
हवे आगे कहे छे क्या हर प्रकार की पुस्तकें पढ़ना दुष्कृति में आता है? बोले नहीं, हमारा अभिप्राय सही है, अभिप्राय सही है तो भोग संबंधी पुस्तक पढ़ना भी दुष्कृति में नहीं आता। आपको पता ही प्रश्न क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है, आ, यहाँ पे जाके लिखा है कि किसे किसे दुष्कृति कहा गया, तो कौन सा काम भोग आदि की वासनाएं जागृत हो, सौंदर्य आदि। तो किसी ने प्रश्न किया होगा कि आप जिनका पढ़ने का निषेध कर रहे हो, कितने लोग हैं इनमें से जिन्होंने प्रथमान युग की मूल किताबें पढ़ी है? कोई है जिसने पद्म पुराण पढ़ा हो, आदि पुराण पढ़ा हो, हरिवंश पुराण पढ़ा हो? बोलो खुशी बहन, कौन सा पुराण पढ़ा है? सर पांडव पुराण चल रहा है। पांडव पुराण चल रहा है, बहुत बढ़िया। शुभ चंद्राचार्य वाला? शुभ हाँ चंद्राचार्य का है। शुभ हाँ। चंद्राचार्य। अब आपको उसकी शैली का थोड़ा बहुत तो पता चला होगा वो पढ़ के। पांडव पुराण मैंने थोड़ा ऊपर से पढ़ा है, मैंने 3 पुराण पढ़े हैं ज्यादा। हर पुराण में श्रृंगार का वर्णन बहुत ज्यादा श्रृंगार का वर्णन आता है। नायिका का वर्णन आएगा, नक्षिक वर्णन आएगा, बराबर। फिर दुनिया भर की बातों का वर्णन आएगा। तो शायद कोई, और ऐसा सब पुराणों में है। अब मैं 2 प्रश्न करता हूँ, आप 2 बातें बताना चाहता हूँ। क्यों आचार्यों ने उन चीजों को पुराणों में रखा, और क्यों उनको पढ़ना दुष्कृति नहीं है? पहले नंबर आचार्य की मजबूरी क्या, और दूसरे नंबर उनको पढ़ना दुष्कृति क्यों नहीं है? उसका मेन कारण, पुराने समय में हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर था। हर चीज का एक स्ट्रक्चर जो आज भी है, कि भाई कविता है तो कविता कब कविता कही जाएगी, पुराण कब पुराण कहा जाएगा, बराबर। तो एक सबका एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में ये कंपलसरी था कि जो भी पुराण या कोई ऐसी कहानी वाला ग्रंथ लिखे, तो उसको कंपलसरी श्रृंगार का वर्णन उसमें ऐड करना पड़ता था। अदरवाइज वो लिटरेचर यानी साहित्य का नाम नहीं पाता। ये नियम, संस्कृत के काव्यों के ये नियम है कि अगर आपके काव्यों में, साहित्य में श्रृंगार का वर्णन नहीं है, तो वो काव्य काव्य रूप में नहीं कहे जाते। तो आचार्यों की ये समस्या थी कि उनको वो काव्य लिखना है और उसको काव्य के रूप में मान्यता देनी है, तो उनको उस रूप में श्रृंगार परक वर्णन लिखना पड़ता, इसीलिए उन्होंने लिखा। दूसरे नंबर की बात, उसको पढ़ने में दुश्रुति का दोष क्यों नहीं लगता? तो वही बात है कि जिसके राग पोषण का अभिप्राय हो, बराबर, उसे दुश्रुति का दोष लगे। जिसे राग पोषण का अभिप्राय ना हो, उसे दुश्रुति दुश्रवण का दोष कैसे लगे? देखो मैं एक बड़ी निर्दोष घटना बताता हूँ वेदांश के जीवन की। ऐसे में एक दिन नेट पर सर्च कर रहा था, तो वो नेट पर वो बाजू में बैठा था, और वो सर्च करते करते एडवर्टाइज के रूप में कई बार न्यूसेंस नहीं आ जाता, तो एक जिसे अपन कहेंगे न्यूड फोटो आ गया। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में, उसी समय वेदांश हाजिर था, बराबर। तो वेदांश पता क्या कहता है? भगवान जी के दर्शन करो। मतलब मुझे गर्व हुआ, वास्तव में बता रहा हूँ, और उस भोलेपन पे मैं रीझ गया कि मैंने, ये है कि दिगंबर प्रतिमा के दर्शन का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि उसके अंदर में कोई दिगंबर मुद्रा दिखती है तो उसमें विकार नहीं दिखता, उसमें भी उसे क्या दिखाई दिया? भगवान दिखाई। समझ में आया कि नहीं है? उससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि वस्तु में विकार नहीं होता, आपके अभिप्राय में विकार होता है। बालक का मन है, उसके अंदर में भी, जिसे अपनी भाषा में सोवरिन अनसोवरिन, सभ्य असभ्य, अच्छा बुरा, इसकी कोई भी वो नहीं है, इमेज नहीं बनी, पूर्वाग्रह नहीं है उसके अंदर। हाँ, लेकिन उसने प्रतिमाओं को देखा है। क्या देखा है? प्रतिमाओं को देखा है। और प्रतिमाओं को देखा, उसने देखा कि भगवान के मंदिर में खड़गासन की प्रतिमा होती है, तो ऐसी होती है। तो अब उसके दिमाग में पहली छवि क्या बनी? उसके दिमाग में पहली छवि ये बनी कि जो इस प्रकार की दिगंबर मुद्रा होती है वो तो भगवान की।
तो उसे उसमें भी नमो और इंताड़म बोलने का भाव। अब इससे सिद्ध हो जाता है, आचार्यों ने तो लिखा है, लेकिन अगर किसी का मन बालकवत निर्दोष है तो पढ़े सुने देखे तो भी उसके अभिप्राय विपरीत नहीं होता, तो उसके अंदर में विकार पुष्ट नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज है। आज भी बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। उनको ये लगता है कि बाहर में दृश्य बदले हैं, इसके कारण विकार बढ़े। बराबर। आज किसी भी जिनको समझ नहीं है वो बार बार एक ही चीज कहते हैं, कौन सी? कि मोबाइल नो जमानो आवी गयो, इंटरनेट नो जमानो आवी गयो, टीवी आवी गई, आने लीधे बधी। अरे भाई, जिनको बिगड़ना था वो पहले भी बिगड़ते थे। मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, पेपर वेपर ये तो भी लोग ना जाने कहां से वो विकार के कारण भूल गए। और जिनको नहीं बिगड़ना था वो तब भी नहीं बिगड़ते और अब भी नहीं बिगड़ते। इसीलिए दोष अभिप्राय की अशुद्धता से उत्पन्न होता है, ना कि पढ़ने और लिखने और उस बराबर। हाँ, लेकिन उसी राग के अभिप्राय पूर्वक स्पेशल सर्च कर करके आप वो चीजें देख रहे हो। मतलब इसका ये मतलब नहीं कहना चाह रहा कि भाई अच्छा रहा पंडित जी आपने बता दिया कि इनसे विकार नहीं होता है, कल से हम क्या करेंगे, दिन भर सर्च करेंगे, गंदी चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और कोई हमसे पूछेगा तो कह देंगे इनमें कहाँ पाप लगता है, पाप तो मन में होता है। अरे हाँ, मन का पाप था वही बाहर कर। बात समझ में आई? जिनके मन में विकार नहीं होता है वो खोजते नहीं है, और सहज प्रसंग बने तो विरक्त हो जाते हैं। और जिनके विकार मन में विकार होता है वो ही खोजते हुए फिरते हैं। बराबर। और निरंतर उनकी दृष्टि में यही भाव हो, करना है कि नहीं है? ये चीज को थोड़ा विचारना पड़ेगा। तो इसीलिए दुश्रुति में यहाँ पे बोला कि आचार्यों ने कहीं पे श्रृंगार आदि का वर्णन लिखा भी है, तो लिखा हुआ पढ़ा हुआ भी उनके अंदर में विपरीत अभिप्राय के साथ में अगर नहीं है तो वह जीव दुश्रुति नहीं। और दूसरे नंबर की बात, जिन्होंने राग का पोषण कर लिया उनको, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई जिनको राग का पोषण करना है वो तो कहीं पर भी राग का पोषण करते। और प्रथमान योग में तो एक वैराग्य की बात आ भी जाएगी, बाकी वो तो ऐसा जीवन जीते हैं कि वो हर जगह किस इनमें ही पड़े रहते हैं। तो जिनको राग का पोषण करना है वो तो कहीं पर भी राग ही पुष्ट करेंगे, लेकिन जिन्हें वितरागता का पोषण करना है वो लोग शायद उन माध्यम से वितरागता का भी पोषण करें। इसीलिए प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ने में भी कोई बुराई या दुश्रुति जैसा दोष वहां पे लगता नहीं। क्लियर? बराबर ख्याल में? फिर भी लोगों की कमजोरी को देखकर, विराग ये प्रसंग देखकर लोग विरक्त नहीं हो पाते। इसीलिए आधुनिक जो साहित्य लिखा जा रहा है, कथा साहित्य, ब्रह्मचारी हरि हीरालाल जी ने बहुत बड़ा साहित्य लिखा, सब पुराणों का सरल अनुवाद किया। उसमें उन्होंने क्या किया, ऐसे प्रसंगों को जानबूझ कर अवॉइड कर दिया कि भाई जिस गली में जिसको गिरने की समस्या हो, पढ़ने की समस्या, जस्टिफिकेशन देना पड़े ऐसा काम करें, सीधा सीधा मार्ग पकड़ा दो। बराबर। तो उन्होंने, और आज आज जो भी करंट लिटरेचर जो छोटी छोटी कहानियों के रूप में है, उनमें कहीं पर भी आपको श्रृंगार की बातें दिखाई नहीं देगी, बल्कि उन श्रृंगार की बातों के स्थान पर उत्तम तत्व की चर्चा ने और विचार ही शामिल हो गया। ये हमने मॉडिफाई किया है। किसके कारण? एक तो આજના લિટરેચરના નિયમો બદલાઈ ગયા છે। હવે શ્રૃંગાર યુગના જેમ ઇંગ્લિશમાં હોય ને, જેમ કે હિન્દીમાં રતિકાલ હોય, એમ ઇંગ્લિશમાં પણ વિક્ટોરિયન એજ, એના પહેલાનો એજ, એટલે કોઈ પણ લિટરેચરનો જે પ્રિમિટિવ પીરિયડ છે એમાં શ્રૃંગારની જ પ્રચુરતા હોય। પછી અત્યારે એવું કોઈ અનિવાર્યતા નથી કે તમે આ ઝોનમાં લખો તો જ તમારું લિટરેચર ગણાશે। તો હવે આપણે લખવા માટે સ્વતંત્ર છીએ, તો આ વસ્તુને એડ કર્યા વગર પણ આપણું સાહિત્ય રૂપે ગણાય છે, તો હવે કોઈ લખતું। કન્ટેમ્પરરી લેખકોમાં કોઈ પણ એવો નથી જે પ્રથમાન યોગના શાસ્ત્રમાં આ પણ જાતની કોઈ વસ્તુ એડ કરે। બરાબર। જો કે અત્યારના મોટા ભાગના લેખક ગૃહસ્થ છે,
અને પહેલાના મોટા ભાગના લેખક સાધુ હતા, પણ સાધુઓએ પણ આવું લખવું પડ્યું. અને આજે ગ્રસ્ત પણ લખતા નથી. તો એનો એ મતલબ નહીં કે આજના ગ્રસ્ત સાધુ કરતા સારા છે. આજના ગ્રસ્ત માટે જે લેખન છે એના માટે ઓપન માઇન્ડ મળ્યું છે કે ભાઈ તમે આ રીતે પણ લખી શકો ને આ રીતે પણ લખી શકો છો. અને પહેલા સમય 1000 સાલ પહેલા એ બે ઓપ્શન હતા જ નહીં. જો તમે લિટરેચર લખો તો ફરજિયાત તમને આ બધું લખવું પડે. એટલા માટે એ આચાર્ય સમય લખવું પડતું. ઠીક છે, આ એ સમયનો કાલનો નિયમ. હવે કોઈને કઈ વાંધો નથી, બરાબર. ચલો આટલી વસ્તુ આપણે રહી. આગળનું સૂત્ર લઈએ. જે સૂત્ર તો નહીં, હજી એની ચર્ચા ઘણી બાકી છે. બહુ ડીપલી એમને અનર્થ દંડને આ સ્લાઇડમાં એક્સપ્લેન કર્યો છે. સારું, હવે એક થોડુંક હું સૂત્ર પહેલા વાંચું, જ્યાં એ સૂત્રમાં એ બધી વસ્તુ આવી છે, પછી એનો અર્થ આપણે કરીશું. જો આ રહ્યો 32 નંબરનો સૂત્ર છે. કંદર્પ કૌતકુચ્ય, બોલો. કંદર્પ કૌતકુચ્ય મોખર્ય મને ખબર છે, હા, જેમ ચોપડી લઈ લો ને છોકરાઓની તો બધા મોંઘા થઈ જાય, આવું થઈ જાય છે. મોખર્ય મોખર્ય સમીક્ષાધિકરણોપભોગ સમીક્ષાધિકરણોપભોગ પરિભોગનર્થક્યાની પરિભોગાનર્થક્યાની. ફરીથી કંદર્પ કૌતકુચ્ય કંદર્પ કૌતકુચ્ય મોખર્યા સમીક્ષાધિકરણોપભોગ મોખર્યા સમીક્ષાધિકરણોપભોગ परिभोगानर्थक्यानि. परिभोगानर्थक्यानि. देखो क्या कहते हैं, હવે 5 अनर्थ दंड की बातें कही. कौन कौन सी? कंदर्प, कौतकुच्य, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थक. એનો શું અર્થ છે આપણે આગળ સમજીએ. જો કંદર્પ, કંદર્પ શું કહેવાય? રાગ ભાવ की तीव्रता बस हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलવું. ઘણી વખત આપના થાય કે શું કહેવાય કે કોઈ પ્રત્યે રાગ ભાવ વધારે છે, બરાબર, અને રાગ ભાવને લીધે પછી આપણે એને સંતુષ્ટ કરવા માટે પોતાની શું કહેવાય કે એક અત્યારે છે ને આમ હ્યુમર પ્રેઝન્ટ કરવા માટે કે ભાઈ આ તો હું તો બહુ મોટો સેન્સ ઓફ હ્યુમર વાળો છું, આ વિચાર કરીને અસભ્ય વચન. અને એક વસ્તુ મેં માર્ક કરી છે, તમને પણ માર્ક કરી હશે, કે આ જગતમાં ને હસાવા માટે સૌથી સહેલામાં સહેલી રીતિ કઈ છે? ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ ના સેન્ટેન્સ બોલ. દરેક ભાષામાં મને 3-4 જાતની ભાષાઓનો તો એક્સપિરિયન્સ છે. દરેક ભાષામાં હસાવા માટેના સૌથી ચીપ એફર્ટ જો કરવામાં આવે છે એ કયો છે? ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ ના સેન્ટેન્સ કહો. કપિલ શર્મા ટાઈપની વાત. લડકાને છોકરાને છોકરી બનાવો, પછી ઊંધા ચત્તે આખું ચેષ્ટાઓ કરો, અને પછી લોકોને હસો. આ કરવા માટે તમે તમારો આઈક્યુ લેવલ વધારવાની જરૂર નથી, તમને નિર્લજ થવાની જરૂર છે. સમજ્યા? કે નિર્લજતા પૂર્વક તમે આવા ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ વાળી વાતો કહો તો તમને ડાઉન સ્ટેન્ડર્ડ ના ઘણા લોકો મળી જશે જે તાલી પીટી પીટીને હસશે, અને બહુ જ હસશે. બરાબર? તો એ હાસ્યનો આમ તો હાસ્ય પણ કશાય જ છે, બરાબર, પણ હાસ્ય નિર્દોષ હોય તો શોભે. બરાબર? તમે ક્યારે કદાચ હરિશંકર પરસાઈના શું કહેવાય વ્યંગ સેટાયર હિન્દીમાં લખતા હતા, બહુ સારા વ્યંગકાર છે, કદાચ 100% ખાતરી છે કોઈ નહીં વાંચ્યો હશે. બરાબર, કેમ કે તમે ગુજરાતી અને પછી આ ક્યાં હિન્દીના સાહિત્ય વાંચો, પણ તમે ક્યારે એમની પેલો શું કહેવાય કે વાંચો, કદાચ વાંચવા મળે વ્યંગ તો. એટલે ઉત્તમ હાસ્ય કેવો હોય ને એ ઉત્તમ હાસ્ય ત્યાંથી ખબર. બરાબર? તો આ તો અત્યારે જે પીરસવામાં આવે છે ને એ બધા ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ હાસ્ય છે. આ તો હાસ્યમાં અધમ ક્વોલિટીનો હાસ્ય છે, એ અનર્થ દંડ છે.
આમ તો હાસ્ય કશાય જ છે, પણ આવી રીતે ખોટા વચનોથી, રાગ દ્વેષમય વચનોથી, ડબલ સ્ટેન્ડર્ડના કથનોથી જે હાસ્ય ક્રિએટ કરવામાં આવે, હ્યુમર ક્રિએટ કરવામાં આવે, એ હ્યુમર અનાર્થ દંડવ્રત છે. હવે હ્યુમર કોઈ પણ રીતે તમે કરો, કોઈને એટ્રેક્ટ કરવા માટે આવો હ્યુમર ક્રિએટ કરો, કા સભાને શું કહેવાય કે જશ લેવા માટે આવો હ્યુમર ક્રિએટ કરો, આવું ના હોવું જોઈએ. બરાબર? તમારો હ્યુમર પણ સાહજિક હોવું જોઈએ. એ કહે કે આ હાસ્યને તો સ્વીકાર કર્યો છે, પણ હાસ્યના નામે અભદ્રતાએ અનર્થ દંડના નામથી કહેવામાં આવે છે. ઠીક છે? પછી કૌતુકુચ્ચ એટલે કંદર્પની સાથે શારીરિક કુચેષ્ટા કરો. આમાં પાકું બેઠશે આ કપિલ શર્માની બધી ટીમ. આ એકલા કહેતા જ નથી, એમની આખી ટીમમાં શું કરે, ખોટી ભૂંડી ભાગ ભંગીમાં લોકો બહુ કે કપિલ શર્મા. એમાં કપિલ શર્માના અમુક ટાઈમે તો સારો હોય, પણ મોટા ભાગે એમાં જે હોય કેવો હોય, છોકરાને છોકરી બનાવે ને ભૂંડી ચેષ્ટાઓ કરાવે. એનાથી જે હાસ્ય ક્રિએટ કરવામાં આવે છે એ શું કહેવાય છે? કૌતુકુચ્ચ નામ. બરાબર? ખ્યાલમાં આવે છે? હા, સમજાય કે નહીં સમજાય? આવી રીતે પછી જો ત્રીજા નંબરનું શું કહે છે? ધીટતા પૂર્વક कुछ भी बकवास करना. ધીટતા એટલે ધીટતા માટે ઇંગ્લિશમાં શું કહે કે એક પ્રકારનું શું કહેવાય કે સમજ્યા વિચાર્યા વગેરે કંઈ પણ બોલ કરવું, એને શું કહીશું ઇંગ્લિશમાં આપણે? હેતલબેન, ખુશીબેન, એટલે ધીટ છે માણસ, જળ જેવો છે અને કંઈ પણ બોલે. નોનસેન્સ બોલો. ના, આ નોનસેન્સમાં સેન્સ નથી, બીજું કોઈ સેન્સ શોધવું પડશે ધીટતા માટે. ચલો વાંધો નહીં. એક એવો ધીટ સમજી ગયા ને તમે લોકો, એવો આમ સ્ટબર્ન જિદ્દી ટાઈપનો થોડું કહેવાય કે જેને કઈ ભાન જ નહીં પડતી, બસ જાડી ચામડીનો, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, જાડી ચામડીને થઈને કંઈ પણ બોલ કરવું. સર રિજિડ રિજિડ તો ના, એ તો પોઝિટિવ પણ હોય. એટલે હું મારા પ્રિન્સિપલમાં રિજિડ છું, એટલે આમાં કોઈ ધીટતા નથી. સમજ્યા? એટલે અમુક જગ્યા તો રિજિડ બધા હોય, નાની પણ અમુક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં તો રિજિડ હોય. બધી જગ્યાએ ફ્લેક્સિબલ થઈ જાવ તો સ્વરૂપ જ ના રહે કઈ. સમજ્યા? પાણી પણ ભલે કેટલો ફ્લેક્સિબલ છે, પણ પીવા માટે તો રિજિડ ગ્લાસમાં જ પકડવું પડે. જો ગ્લાસ પણ પાણીની જેમ ફ્લેક્સિબલ થઈ જાય તો શું થાય પારોલબેન? એટલે ખબર પડી ને, 100% ફ્લેક્સિબિલિટી નથી ચાલતી. અમુક તો તમારો બેઝ હોવો જ જોઈએ. જો તમે બેઝમાં ફ્લેક્સિબલ થઈ ગયા ને તો પછી તમે રહેશો જ નહીં, કઈ રહેશે. ટૂંકમાં આટલામાંથી નાનો દ્રષ્ટાંતથી સમજી લે. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? તો સમજ્યા? તો આ કંઈ પણ બકવાસ કરવી એ મુખરતા. પછી અસમીક્ષ અધિકરણ એટલે પ્રયોજન વિચાર્યા વગર વધારે પ્રવૃત્તિ કરવી. આ બહુ મજેદાર વસ્તુ છે. ઘણા લોકો તમને બહુ જ આમ એક્ટિવ દેખાય, બરાબર? કારણ શું? એમને એકલું કરવું હોય, પણ શું કરવું ખબર ના હોય. અને મારા જેવા કઈ કામ કરે તો પેલા સ્લો દેખાય, કેમ કે જ્યાં સુધી સ્પષ્ટતા ન હોય ત્યાં સુધી ડગલો મુકાતો નથી મારાથી. તો હું કરવું જઈને, પણ અમુક લોકો આમ હોય ઘરમાં, આમ તેમ ફરતા રહે, કઈ ઉઠા ધરી કામ કરે, પછી આમ કરે, જેમ કે વેદાંશ વાડી કરે. આમ 24 કલાક એક્ટિવ, 24 કલાક એક્ટિવ, પણ મતલબ શું બોલે? કઈ નહીં. આ જે છે ને એ કે પ્રયોજન વિચાર્યા વગરની બધી આખો દિવસ ઘૂમ કરશે, રમકડા ફેંકશે, ચાદર ફેંકશે, આમ કરશે તેમ, એક સેકન્ડ માટે નવરો પડતો નથી. પણ આ બધું કામ શું કામમાં છે કે ના કામમાં છે? બોલો એના માટે તો શીખવા માટે છે. પણ સમજો, આપણે જનરલ ભાષામાં કહીએ, તમે એને નાકામ ઉત્તર નહીં આપ્યો, સારી વાત છે. નહીં તો તમને બધાને પૂછત કે આપણે જે કરી રહ્યા છે એનાથી શું કરવાના છીએ. આપણા પણ કામથી કઈ મળવાનું નથી. એને કામને આપણે એકાંત કહી દઈએ કે નાકામો છે, ને આપણા કામથી આપણે શું મળશે? બતાવો, વિચાર કરો.
ધન ભેગો કરી કરીને બેંકમાં મૂકી દઈએ, પછી છેલ્લે મરી જઈએ, આપણા કામમાં શું આવે? હે બરાબર, બધા જે આપણે કર્યા છીએ, બરાબર, મેકઅપમાં 3 કલાક લગાડ્યા અને પછી અડધો કલાક પછી ઉડી ગયો, શું કામનું? હે વિચાર કરો, આ બધી વસ્તુ વિચારવા જેવી હોય કે આમાં પણ વેદાંશ વાળી થાય છે. હે કે ફ્રૂટફુલ નથી રહેતા. આત્મજ્ઞાનના સંસ્કાર આ ખરેખર કેટલી મૂળતા છે. અત્યારે જે જ્ઞાનના સંસ્કાર છે તમારા, એ આ ભાવમાં અત્યારે તમને આનંદદાયક થાય છે કે નથી થતું? થાય છે સાહેબ, તમે આ પાડો કે ના પણ મને તો આગળ વધવું છે, તું તો કઈ દઈશ આ થાય છે. સમજ્યા? અત્યારે તમારા પરિણામ બરાબર છે, વ્યવસ્થિત છે. પછી જ્યારે જ્યારે સ્મરણમાં આવશે ત્યારે પણ તમારા પરિણામને સંભાળશે. તમારા પૈસાને નહીં, તમારા બેલેન્સને નહીં, તમારા વસ્તુ તમે જે નથી એમાં એ વાત કામ નથી લાગતું, પણ તમે જે છો ત્યાં એ કામ લાગે. એટલે અત્યારે સાચવે છે તમારે, પછી સ્મૃતિ રૂપે સાચવશે, અને આ ભાવ નીકળી જાય, બીજો ભાવ આવશે ત્યારે પણ એ સંસ્કાર રૂપે તમારી સાચવણી કરશે. એટલે સ્વાધ્યાય એને ધર્મની વાત, તત્વની ચર્ચા કેટલી અગત્યની છે આ વસ્તુથી ખબર પડે કે જે તમને અત્યારે સાચવે પ્રત્યક્ષ રૂપે, પછી સાચવશે સ્મૃતિ રૂપે, અને આગળના ભાવમાં સાચવશે સંસ્કાર રૂપે. અને એની સામે તમે ધનને રાખો તો શું કરે? અત્યારે ધન અર્જનમાં પરિણામ બગડે, પછી સંરક્ષણમાં પરિણામ બગડે, અને પરિગ્રહના પાપથી આગળનો ભાવ બગડે. તો ત્રણેય જગ્યા બગાડનારો છે એ આપણે ઉપયોગી લાગે, અને ત્રણેય જગ્યા સુધારનારો છે. આવું જ્ઞાન આપને નકામું લાગે તો એને શું કહીએ? આપણે મૂર્ખતા કહીએ કે શું? ભાઈ આચાર્ય બહુ જ કરુણાપૂર્વક ફરમાવે છે, પ્રવૃત્તિ તો તને કરવી જ પડશે ભાઈ, પણ પ્રયોજન વગર પ્રવૃત્તિ ના કર. પ્રવૃત્તિ તો કરવી જ પડશે, પણ પ્રયોજન વગર પ્રવૃત્તિ ના કર. સિંહ પણ હોય ને, સિંહની તો ખોરાક કેવી? હરણની હોય, બરાબર, જંગલી જાનવરોની હોય, પણ સિંહની એક ખૂબી છે, અને એ બધા જંગલના પશુઓને ખબર છે કે એક હરણને મારે, બરાબર, પછી એનો પેટ ભરી જાય ને તો બધા હરણો એના બાજુથી નીકળી જાય, એની સામે જોતોય નહીં, જોતો જ નથી, સામને નજર કરકે તક નહીં દેખતા. કેમ? આજનું કામ પતી ગયું, હવે કાલે જોઈશું, कल फिर दौड़ेंगे, हिरण बचने के लिए दौड़ेगा, शेर पकड़ने के लिए दौड़ेगा. वो बचने की प्रवृत्ति भी प्रयोजन भूत है और पकड़ने की प्रवृत्ति भी प्रयोजन भूत है, लेकिन हमारी बचाने की प्रवृत्ति अप्रयोजन भूत है, कमाने की प्रवृत्ति अप्रयोजन भूत है. क्योंकि बचा बचा के कितना बचा लोगे, कमा कमा के कितना कमा लोगे? शेर जो करता है वो तो उसके पेट में जाता है, और हम जो करते हैं वो पेटी में जाता है. आएगी नहीं ये बात? कहने के लिए हो सकता है कि भाई ये तो नॉन वेज खाए છે અને અમે ભાઈ ઠીક છે, મુદ્દા નોન વેજ વેજ નો નથી. એ તો તમે સિંહની પર્યાયમાં જાઓ તો તમે ભાખરી ને થેપલા નથી ખાવાના. આપણે પણ જ્યારે સિંહની પર્યાયમાં ગયા હશું ત્યારે આપણે પણ આવું જ પરાક્રમ કર્યો હશે, એમાં કઈ નવાઈ વાત. આજે ખરેખર વિચારતા આપણે એવું લાગે, પણ કર્યું જ હશે ને ભાઈ, એમાં શું છે? એનો શરીર આ પ્રકારનું છે, આ નહીં કરે તો એનું જીવન ના ચાલે. સિંહની પર્યાય ભગવાન મહાવીરને થયો હતો ને કે જ્યાં સુધી એમનો જીવન હતું ત્યાં સુધી કર્યો, પછી જ્યારે એમની પાસે પછી મુનિરાજનો સંબોધન મળ્યો અને એમને એમ લાગ્યું कि भाई अब 2 चॉइस है हमारे पास में, या तो पशुओं को मार के जियो या समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त हो जाओ. तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना कि भाई अब हम अपने निमित्त से पशुओं को नहीं मारेंगे, अब ये शरीर को आहार नहीं मिलना तो नहीं मिलने दो. तो 17-18 दिन में करीबन उनका निधन, वो देह परिवर्तन हो गया. बराबर ख्याल मारा के लिए. लेकिन वो सिंह भी जो अपने को अल्प ज्ञानी अज्ञानी लगता है, वो भी कभी अप्रयोजन पूर्ण क्या कहते हैं एक्टिविटी नहीं करता. और जो मनुष्य सबसे बड़ा ज्ञानी है
वो कभी वो सबसे ज्यादा अप्रयोजनभूत कार्य, मतलब वो ऐसे काम कर रहा है जो एक्चुअल में उसके जीवन से, अस्तित्व से जुड़ते नहीं। भरोसा होता है आपको इस बात? जो जीवन के लिए जरूरी वो काम नहीं कर रहे। आज हम जो अपनी फॉल्स इमेज में पड़े हुए हैं, भोग सामग्री में पड़े हुए हैं, सुख सामग्रियों में पड़े हुए हैं, क्या वो जीवन के अनिवार्य तत्व हैं? क्या उनके बिना हमारा जीवन पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा? शेर नहीं खाएगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उसके जीवन पर। लेकिन अगर आप जो सब डेकोरेटिव और एक्सट्रोवर्ट के कारण यहाँ घूम लो, ये खा लो, वो कर लो, ये पहन लो, कितनी चिंता, 1000 प्रकार के कपड़े, न 1000 प्रकार की जगह, न 1000 प्रकार की वानगियां, न करोड़ों का बैलेंस, ये सब क्या हमारे अस्तित्व से जुड़ते हैं? नेसेसरी पार्ट है क्या हमारे अस्तित्व? क्या ये नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा क्या? यानी हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट है वो लेस वर्थी, कम कीमती चीजों पर है। और मैं तो अनवर्थी कहूं तो भी चल जाए, जिनकी कोई कीमत नहीं है उनमें ज्यादातर एफर्ट रहता है। और जो एक्चुअल कीमती है ये जीवन, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वर्थलेस में हमारा जीवन जा रहा है, ये बिल्कुल क्लियर वस्तु में कहना चाहता हूं। इसीलिए ये कहता हूं, यहाँ पे बोला है कि भैया थोड़ा समझ लो, थोड़ा वो सुधर जाओ, और प्रयोजन के बिना अधिक प्रवृत्ति मत करो। जितना जरूरी है उतना ही करो, धन भी उतना ही कमाओ जितना जरूरी है, बराबर बोलो भी उतना जितना जरूरी है, गमन आगमन भी उतना ही करो जितना जरूरी है। समझ में आया? वस्तुओं भी इकट्ठी उतनी ही करो जितनी जरूरी है। हर जगह जरूरत का कॉन्सेप्ट बना के रखो, नहीं तो अपने जीवन का सत्यानाश करोगे और कुदरत की सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ के रखोगे। ये कुदरत ने जो भी आज अनबैलेंस हुआ है, ये अनबैलेंस मूर्खों के कारण नहीं हुआ, ये बुद्धिमानों ने किया। आपको पता है मनुष्य एक सभ्य मनुष्य जिसे अपन बोलते हैं, आधुनिक मॉडर्न ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 500 क्या कहते हैं, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में 400-500 साल की एक सभ्यता बनी। उसके पहले विज्ञान कहता है कि 2.5-3 लाख और 25-30 लाख साल पहले से प्रिमिटिव एज के मानस रहते। तो 25 लाख साल यानी कितने साल? 24,99,000 क्या कहते हैं 99,500-600 साल में कुदरत का उतना बिगाड़ नहीं हुआ जितना बिगाड़ हमने 300-400 साल में कर दिया। सो कॉल्ड इंटेलिजेंसी, मोर थिंकिंग के कारण, लेस थिंकिंग की होती तो कम होता, मोर एंड मोर थिंकिंग, थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग सोचे जा रहा है, किए जा रहा है, सोचे जा रहा है, किए जा रहा है। और जो लाखों साल में जो असंतुलन क्रिएट नहीं हुआ, वो आज रिसोर्स और सप्लाई के बीच में इतना बड़ा असंतुलन पैदा हो। और ये सारा का सारा गैप मात्र और मात्र बिना प्रयोजन की प्रवृत्ति के कारण। एक व्यक्ति को भूत चढ़ता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, वो अपने विजन में हजारों लोगों को जोड़ लेता है। वो हजारों लोग क्या बने हैं, उसको आगे बढ़ाने में लगे। वो कहता है कैसे भी करके मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए, तो किसी दूसरे को टोपी पहना रहा है, दूसरा तीसरे को टोपी पहना रहा, तीसरा चौथे को टोपी पहना रहा, और सब एक दूसरे को टोपी पहनाते जा रहे। समझ में आया? गैर जरूरी चीज। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना ये कोई फायदे का सौदा नहीं, दुनिया का सबसे सुखी आदमी बनना ये फायदे का सौदा है। और अमीरी और सुखी पर्यायवाची नहीं, सुखी भगवान है और अमीर दुखी। पॉइंट समझ में आ रहा? लेकिन ये चल रहा है जगत। ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंसी ने 23,99,500 वर्ष के संतुलन को खत्म कर दिया। 24 लाख 300-400 साल में जो भी गड़बड़ हुआ है वो मात्र और मात्र इसकी जरूरत से ज्यादा संग्रह वृत्ति के कारण हुआ है।
इसीलिए कहते हैं अब ज्यादा सोचना बंद करो, थोड़ा कम सोचो। 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, बराबर। कपड़े इतने इकट्ठे कर लिए, उसमें इतना, अरे भाई थोड़ा सा जरा शांति से विचार करो, अपने आप को विकसित करो, इन भोगों के रूप में नहीं, स्वभाव के रूप में विकसित करो। ये बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। ख्याल में आई कि नहीं आई? तो क्लियर हुआ? कहाँ गए? आगे की अपन स्लाइड लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पर अभी आपको पॉपअप दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन पर? स्लाइड नहीं, देखा है। ये क्या है, ये पॉपअप जैसा कुछ आ जाता है, फिर जाता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता जाएगा कैसे। नहीं गया, अभी भी नहीं गया, चलो बाद में जाएगा। वो पूरा हाफ पेज का एडवर्टाइज जाता है साथ में, कोई बात नहीं। असमीक्षा आदि, और फिर क्या बोला, एक आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक क्या करना, ये गायब हो गया, हाँ अब गया। आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना, ये भी ये बात आ गई जो अपन ने भी चर्चा की। आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना, ये भी अनर्थ दंड व्रत का अतिचार है। देखो मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, पुनः कहता हूँ, आपके मरने के बाद अगर आपके अकाउंट में ज्यादा धन रहता है, इसका मतलब क्या, मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया, बोले नहीं, जितना धन अधिक रहा उतनी तुमने मजदूरी की। क्या की? मजदूरी। मतलब जरूरत नहीं थी और तो भी तुम मजदूरी करते गए। तो ये सब किसके चिन्ह है? ये आपकी ग्लोरियस लाइफ के चिन्ह नहीं, ये आपकी बेवकूफी की निशानी। ये आपने, ये जो चीज तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाली उसके लिए जीवन बिताया, और जो साथ में जाने वाली है उसकी तरफ नजर तक नहीं, ये मूर्खता है। इसीलिए सबसे कहता हूं कि बहुत गहराई से जीवन को समझो, एक एक क्षण अमूल्य है। तुम ये भविष्य के चक्कर में, इनके चक्कर में वर्तमान के आनंद को मत खो। संयम से रहो, सादगी से रहो, प्रसन्न रहो, इतने सक्षम बनो कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, संयोग, परिस्थिति आपको दुखी ना। समझ में आया? जो आकांक्षाएं आपके अंदर में दुख का संचार करें, कोई जरूरत नहीं उन आकांक्षाओं को आप पर हावी होने की। हम उन आकांक्षाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, उसके लिए अधिक प्रवृत्ति करते, अधिक संग्रह करते, बराबर। और ऐसे करते करते जीवन कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं तो सही बताऊं, बच्चों को बड़ा होते देखकर मुझे भी पता चलता है कि अपन कितने जल्दी बड़े होते। कई बार जब मेरे से लोग मंदिर में कोई कहता है, अरे आटला मोटा થઈ ગયા છોકરો, આટલા મોટા થઈ ગયા, ત્યારે મને એક જ વિચાર આવે, એ છોકરા જ મોટા થઈ રહ્યા છે, હવે ક્યાં છે? આપણે પણ મોટા થઈ ગયા ને। એટલે એના માટે મીટર ચાલે છે 2022, એના માટે જ આવશે, આપણા માટે નહીં આવશે એવું ક્યાં છે? એટલે આપણું પણ જીવનનું મોટા ભાગે પોર્શન એમાં જઈ રહ્યો છે। મુદ્દા એ છે બધું કરીને આપણે ક્યાં પહોંચ્યા, શું કર્યો, જે મેળવ્યો છે આપણા માટે ઉપયોગી છે કે નહીં, શું કરવાનું છે, આ બધી વસ્તુ વિચાર। એક જીવન માટે પોઝિટિવ ગાઈડન્સ રાખો ને, જેનાથી તમને ખબર પડે કે શું કરવા જેવું છે, શું નથી। અને માત્ર અર્થ માટે કામ નહીં કરવું,